Let's do this. Hi everyone, welcome back to my channel. Finally, I am saying this after such a long time. मुझे इतनी खुशी हो रही है ना अंदर से. I am super excited. और भी excitement का कारण ये है because this video is very special because this was the first ever video on my channel and today's video is going to be an updated version of it using all of my favorite products, the products that I'm currently obsessed with. ये मेरा हर रोज का makeup look होता है, like for my shoots or for office and everything. Alright, so the old drill, guys. Subscribe to my channel, please. If you like the video, if you like the vibe, if you like my channel, if you like me, maybe little bit. Wait a minute! Who are you? Please don't mind me if this video is all over the place because it's kind of like my first video after such a long time, so cut me a slack on that. Now let's get started. So guys, firstly I'm going to use some moisturizer. Moisturizer के लिए मेरे पास दो bottles है and I'm going to tell you why I have two bottles because ये दोनों खाली है. पिछली बार क्या हुआ था, मेरे को ये वाला एज अ कोलैबोरेशन ये रिसीव हुआ था, ठीक है. सो आई लव्ड इट. रिसेंटली ऑर्डर फॉर अ न्यू बॉटल एंड आई डिड दैट आफ्टर लाइक 3-4 days जब ये खत्म हो गया था ये वाला. बिकॉज पिछली बार जब ये खत्म हुआ था तो इसमें अंदर ना काफ़ी था, सो मेरे को लगा कि इसमें भी होगा, बट दिस टाइम दिस वाज टोटली एम्प्टी. सो नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट एडजस्ट. आई एम गोइंग टू डू दैट. जितना भी निकला है उसी को पहले अप्लाई कर लेते हैं. कुछ तो निकलो यार, मिला मिला मिला. So you must be wondering कि मैं ऐसे ही एडजस्ट कर रही हूँ. Then yes, मैं ऐसे ही एडजस्ट कर रही हूँ. Now we'll move on to our SPF. I am going to use the Lakme का sunscreen. I love this. एक तो इसमें कोई white cast नहीं होता है and ये भी बहुत quickly skin पे absorb हो जाता है. Now we'll move into a primer. Firstly, look at this tube, okay? ये इतू सा है. This is only 7 grams, but ये मैं पिछले 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ. These are really good. मेरे को लगा था इतना सा प्रोडक्ट है, क्या ही होगा इसके अंदर, बट डैम कुछ ज़्यादा ही है इसके अंदर. सो फॉर माई रेगुलर मेकअप आई डोंट यूज़ फाउंडेशन, आई जस्ट यूज़ कंसीलर बिकॉज कंसीलर मेरा भी फेवरेट बन चुका है. एंड दिस कंसीलर फ्रॉम लैक्मे, दिस इज अ 925 प्राइमर प्लस मैट लिक्विड कंसीलर जो इनका है. दिस इज लाइक द एग्जैक्ट परफेक्ट मैच फॉर माई स्किन टोन विच इज़ योर 20 न्यूड. सो फन स्टोरी गाइज, ये कंसीलर मैंने खरीदा नहीं था, ठीक है. तो मेरे को ये मेरी फ्रेंड ने भेजा था मेरे बर्थडे के लिए एंड मेरा कंसीलर खत्म हो गया था. दैट टाइम आई वाज यूजिंग द स्विस ब्यूटी का कंसीलर. तो मेरा वो खत्म हो गया था एंड मैंने इसे स्टोरी वगैरह में बोला था. देन माई फ्रेंड मुस्कान, शाउट आउट टू यू डार्लिंग, लाइक शी इज़ द स्वीटेस्ट. शी हैड सेंड मी दिस. उसी के बाद से आई स्टार्टेड यूजिंग दिस एंड आई कैन नॉट स्टॉप यूजिंग इट नाउ. ओके, आई नीड अ मिरर. तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं ज़्यादा कंसीलर नहीं यूज़ करती, ठीक है. ऐसे जस्ट ऐसे कॉर्नर पे एंड द लिफ्टिंग इफेक्ट वाले के लिए मैं ऐसे साइड पे यूज़ कर लेती हूँ. एंड आई जनरली यूज़ माई फिंगर टू जस्ट ब्लेंड एवरीथिंग. आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा नेचुरल वाला फिनिश मिलता है. एंड आई रिसेंटली सीन इन वन ऑफ दोज वोग वीडियोज, ब्यूटी सीक्रेट्स, हेली बीबर डूइंग इट. टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज़ माई फिंगर्स जो कि क्लीन है. ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल. आई एम गोइंग टू मूव ऑन विथ माई ब्लश. ब्लश के लिए भी ना आजकल आई एम यूजिंग दिस लिक्विड लिपस्टिक. दिस इज द Elle लिक्विड लिप कलर इन द शेड rhubarb red. Rhubarb. Okay, wait. Rhubarb red. Rhubarb. It's the shade number R53. Let's just get fixed on that, okay? So I take this and just put 1 or 2 drops. Okay, वो पहले ड्रॉप आया लगा नहीं था. ड्रॉप एज इन लाइक डॉट. व्हाट एम आई इवन सेइंग? द स्पंज इज नॉट डैम्प. ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई है. स्टिल इट्स डूइंग अ ग्रेट जॉब. ओके, आई थिंक ये साइड ज़्यादा हो गया, ये साइड कम हो गया. दैट टू मैच द बोथ साइड. So guys, the next thing that I'm going to use is a powder. I will use the Faces Canada ka Weightless Stay Matte Compact with SPF 20. This thing is again my current obsession. Do not forget to take your products till your neck area, like powder, foundation and stuff. Of course, blush नहीं लगाना है यहाँ पे. ये सब तो लगाना ही है जो मतलब स्किन टोन के साथ मैच करता है. Loving the base.
just amazing. Again, keeping it very natural, very simple. I'm just going to do a ऐसे half wing नहीं करते आजकल जो यहाँ से यहाँ तक होके बस end हो जाता. You can see a lot of things changed from my last go to makeup look to this new updated version. मैं बड़ी हो गई हूँ. And makeup करना सीख गई. So before doing the eyeliner, I just wanted to say like I have actually learned, like of course मैं pro नहीं हूँ, but I have learned the techniques, you know, वो flawless base कैसे achieve करना है, eyeshadow कैसे blend करना है. Even though I still suck sometimes, इतना कुछ मैं सीख गई हूँ ना content creation से for the past 2 years. This is a really nice way of learning things, you know. People think कि यार ये क्या ही कर लेते हैं कैमरा के सामने बस ऐसे मेकअप थोप रहे, but you don't understand the process, the happiness that you go through, you know, looking at your videos like कि यार मैं ऐसे मेकअप करती थी और अभी मैं ऐसे करती हूँ, looking at the progress and everything, वो जो feel होती है ना, I think वो सामने वाला इंसान कभी नहीं समझ सकता until and unless that person is doing it sitting in front of the camera. Oh, by the way, this is from Mars. It's their won't smudge, won't budge eyeliner in matte black. I just angle the sketch pen like this, the eyeliner pen like this, and then जो यहाँ पे ऊपर का पोर्शन है थोड़ा सा आगे जाके वहाँ से लेके लास्ट वाले तक मैं बस उनको कनेक्ट कर देती हूँ ताकि इससे क्या होता है एक ट्रायंगुलर सॉर्ट ऑफ शेप मिल जाता है. एंड देन आई जस्ट fill the gap. And there's your perfect wing liner. Half wing liner. एक आई का तो कर लिया, अब दूसरे का मैं ना ऑफ कैमरा करूँगी क्योंकि एक का करते करते मेरे पसीने निकल आए. So I'm done doing both my liners and it's not the same again. पता नहीं सेम कब हो पाएंगे. So guys, moving on to our mascara. This is my favorite mascara at the moment, which is your Faces Canada's Magneteyes Dramatic Volumizing Mascara. And this is my absolute favorite right now. It literally does makes your eyelashes very dramatic. And it's not a very dramatic sort of a thing, but it's very beautiful dramatic sort of a thing, if you know what I mean. अरे कहना क्या चाहते हो? So मैं mostly क्या करती हूँ ना, मैं end की तरफ करती हूँ. Yes, for that effect. So I'm done with my eyes, I'm done with my base, I'm left with my lips. My current favorite combo is these two right now, which is your Swiss Beauty ka Bold Matte Lip Liner in the shade Choco Nude 03. Quality is amazing, color is amazing, everything is amazing. And this lipstick is from your K Beauty. I'm sorry guys, मेरे पास ना इसका वो डब्बा नहीं है, नहीं तो मैं पूरा नाम बोल देती, but मैं शेड बोल देती हूँ. This is the Suspense. इसी स्माइल को बरकरार रखते हुए हम अपना लोअर लिप्स भी कर लेंगे. आई लव टू टैप इट ऑन माई लिप्स ताकि जितना मेरे को चाहिए उतना ही मेरे लिप्स पे लिपस्टिक रहेगा, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है इसको हटाने में अगर एक्सेस हो जाता है. So guys, that was the final look. Now I'm going to set everything in with my makeup fixer. This is also from Faces Canada. This is the Ultime Pro makeup fixer. This is too good. I don't like to go, you know, directly with it, so I take my beauty sponge and I just spritz some on the sponge and then I tap it all into my face. So that was it for the makeup. I don't do anything else. No highlighter, nothing for that matter for my daily wear. So guys, that was it for this video and I'm super happy that I finished this entire video and I just love how the whole
look has turned out to be. Do let me know in the comment section how much you guys loved this and if you're going to try it out or not. If you do this, if you recreate this look, then do not forget to tag me on Instagram. I'll mention the handle in the description box, or even you'll get something over here on the screen as well. Let me know how you liked it. If you guys missed me, I missed each one of you so much. I missed being on YouTube. More exciting stuff is coming, guys, I promise you. So for that, of course, you need to keep a check on my channel. A way of doing it is to subscribe to my channel, hit the notification bell so that you're updated whenever I post a new video. And thank you so much, guys, for watching the whole video. I love you all. Now we are going to end this video right over here. नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा. And I'm going to take your leave and I'll see you in my next video.